So hey guys, welcome back to my channel English Guidener. My name is Gauri Sharma and I'm here with another new topic that is vocabulary. So आज मैं यहाँ पे हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ कि vocabulary क्या होती है. तो आज मैं vocabulary के बारे में I'm gonna tell you everything that where should we use that vocabulary and what is vocabulary and how to enhance your vocabulary, and most of the important thing that I'm going to give you 10 words that we use probably in daily life routine. So, what is vocabulary? Vocabulary क्या है? तो vocabulary is the thing when someone use that the words while conversation. जब हम किसी से बात करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, when I am talking with second person or another person and I am using those words between that conversation, that is vocabulary. जब मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं उन वर्ड्स उस बात के बीच में सेंटेंसेस के बीच में कुछ नए नए वर्ड्स यूज कर रही हूँ, उसे हम वोकैबुलरी कहते हैं. So vocabulary we use while conversating with each other, or simply when we are writing something in paragraph also we use vocabulary. That the words which we use, that is vocabulary. While reading or while writing, which you use the words that are called vocabulary. So when and where does we use vocabulary? So vocabulary हम कैसे और कहाँ use करते हैं? So the first I have told you already that vocabulary हम तो use करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं. It may be a group also, it can be a single person also who is standing in front of you and you are just simply conversating with him or her. तो हम ये सब यूज़ करते हैं वोकैबुलरी के नए नए वर्ड्स. ये सिंपल वर्ड्स होते हैं, जो कैजुअल वर्ड्स होते हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. वो हम किसी के साथ यूज़ करते हैं, हम कुछ लिखने टाइम भी यूज़ करते हैं, हम पैराग्राफ्स में यूज़ करते हैं, हम कोई चीज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर्स देखते हैं, तो उनमें वर्ड्स का जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वोकैबुलरी कहते हैं. सो हाउ टू एनहांस योर वोकैबुलरी. तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि वोकैबुलरी क्या है और उससे हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, बट हम अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं कैसे? हाउ टू इनहांस दैट, हाउ टू लर्न न्यू वर्ड्स. तो हमें जब न्यू वर्ड्स हमने लर्न करने हैं, सो एज यू नो दैट वी हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज लाइक वी हैव इंटरनेट, गूगल एंड मैनी मोर एप्स ऑल्सो. वी हैव मोस्ट ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स. वन ऑफ दैट इज ट्रिब्यून which we used to read every time, or we are normally getting it from anywhere. If we tell to our जो भी हमारे घर पे न्यूज़पेपर देने आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि हमें ट्रिब्यून लगा दीजिए, तो वो हमें देते हैं. या इफ़ यू आर रीडिंग योर बुक्स ऑल्सो, यू कैन जस्ट सिंपली बाय वन इंग्लिश बुक in which the paragraphs are written. You can just normally pick out the words from that. Like example, like I have a book and I want to learn the new vocabulary words, or you can just simply have the dictionary. So you have to take out, you know that your quality, how much you can learn the words. Maybe you have you can learn 5 or 5 to 10 words, or some has lot of capacity that they can grab the 15 to 20 words. So this is at your wish that which thing you are going to choose. So but if normally I would suggest you that you can take from any paragraph or tribunes 5 to 10 words, and after that learn that, memorize them. If you're not understanding that, sometime I noticed that in dictionaries also sometimes words are given and that Hindi meanings are like it is like a lot of it makes a lot of coincidence, like we are not understanding that word, the proper meaning of that. Then you can go to the search, or you can just simply go to the Google and you can just mention that word. So after that mentioning that word, they will give you the results. So you have to see that results. So after memorizing that all words, that what are the meaning and what are the proper meaning and where we should use. So we know the words, but we are not habitual of that where should we use, like when we are conversating with someone, so where we should use. So if you want to know that where we should use our vocabulary, so you just have to practice a lot. Like you can just simply
like you can have a normal friend also, so with friend you can just talk on phone, and after that with this also your vocabulary will enhance, क्योंकि जितना आप किसी से बात करेंगे आपको उन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डिक्शनरी से रोज़ के 5 वर्ड निकाल लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको वर्ड्स रोज़ के निकालने हैं और आपको याद करने हैं, नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे हैं और नॉर्मली हमें कोई वर्ड बोलना नहीं आ रहा है, तो आप एक अपनी डायरी भी बना सकते हैं। नॉर्मली यू कैन जस्ट हैव नॉर्मल योर स्मॉल डायरी, तो उस डायरी में आप लिख सकते हैं वर्ड्स। तो मैंने आपको जैसे नॉर्मली बताया, हम क्या करते हैं, कभी कभी ये हमारी नॉर्मल हैबिट्स में आता है, व्हेन वी आर कॉन्वर्सेटिंग विद ईच अदर और वी आर जस्ट सिंपली टॉकिंग विद ईच अदर, हम कभी किसी किसी वर्ड्स में अटक जाते हैं। हमें उसका मीनिंग तो पता, हमें मन के अंदर पता होता है कि हमें बोलना क्या है, बट उसका हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होता। तो उसके लिए आप नॉर्मली एक छोटी सी डायरी ले सकते हैं, उसमें वो वर्ड्स नोट कर सकते हैं कि मैं किस चीज़ पे मैं अटक गई थी। तो उसके बाद यू कैन जस्ट हैव अ वेब सर्च, और यू कैन जस्ट सिंपली हैव अ लुक ऑन दैट डिक्शनरी, और यू कैन जस्ट सिंपली देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज, यू कैन गो थ्रू एनी ऐप ऑल्सो। तो आप ऐसे वर्ड्स लिखेंगे तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स लर्न होते रहेंगे, क्योंकि आपको जैसे जैसे पता लगे कि आप इन वर्ड्स में अटके हैं, तो आप जब उन वर्ड्स को लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने ये वर्ड्स आज के लर्न किए। तो अब मैं बात करी थी इनहैंस कैसे करनी है अपनी वोकैबुलरी। सो दिस वाज माय टिप दैट विच आई जस्ट गिवन यू। सो हाउ टू enhance your vocabulary? Just take 10 to 15 words, and in the diary you can just write them, memorize them, and जस्ट अपने दिमाग में उसको करिए कि उसका मीनिंग क्या है उस वर्ड का, उसको अच्छे से समझिए, एंड आफ्टर दैट जस्ट राइट देम 5 और 2 to 3 टाइम्स। और आफ्टर दैट आप अगर उसको और भी अच्छे से लॉन्ग टाइम तक लर्न करना चाहते हैं या लॉन्ग टाइम तक याद रखना चाहते हैं, तो आपके कोई खुद से ही पैराग्राफ लिखिए, उन वर्ड्स को अपने उस पैराग्राफ में यूज़ कीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे कैसे उन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो आपने वर्ड्स वो लिखे हैं उनको एक बार सोने से पहले देख लीजिए, क्योंकि हम जितना किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं, हमें उतने टाइम तक याद रहती है। एंड गाइज, वोकैबुलरी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज इफ वी नो द ग्रामर पोर्शन, we know how to conversate with each other, but if we are not good at our vocabulary, we don't know the new words, so we just can't conversate with the person who is standing in front of you like a pro, because we hesitate to use that word. We don't know that where and when to use that word. So this was my tip that how to enhance your vocabulary. So I'm going to give you 10 words that we usually speak in our daily life. Okay, so yeah, I'm gonna give you that words. So my number 1 word is during. So during is the word which we probably use. During का मतलब क्या है हिंदी में? That is के दौरान। के दौरान मीन्स कुछ करते समय या किसी चीज़ में किसी टाइम पे हम कुछ कर रहे हैं, के दौरान ड्यूरिंग का मतलब होता है। So during, if I'm going to give you one example, that is our skin get tan during summers. तो हमारी स्किन टैन हो जाती है समर में। So this was the number 1 word which I just gave you. This we use in our probably in daily life. So my second word is cause. कॉज का हिंदी में क्या मतलब है? कॉज मीन्स कारण, किसी चीज का कारण बनना। सो दैट कॉज मीन्स कारण। आई डोंट वांट टू कॉज एनी ट्रबल्स टू यू, कि मैं आपको कोई भी मुश्किल नहीं देना चाहती, ठीक है, मेरे कारण आपको कोई मुश्किल नहीं देना चाहती। तो कॉज हम यूज करते हैं मेरे कारण या इसके कारण ऐसा हुआ। जब हमें कारण वर्ड यूज करना है किसी को कुछ बोलते समय, सो वी यूज दैट टाइम कॉज. Okay, so this was my second point which I give you. So my third point is sufficient. So what is the meaning of sufficient? Sufficient means काफी, काफी होना, मतलब
बस इतना काफ़ी है। जब हम कुछ भी काफ़ी वर्ड्स यूज़ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ को बोलना है कि बस इतना काफ़ी है, या हमें बहुत काफ़ी टाइम नहीं बचा हमारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने को, सो लाइक इफ़ वी यूज़ this sufficient word if in this sufficient word we use in English sentence, so how to use that word? We can use like we don't have sufficient time to prepare for our final termination or for our final examination, कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम या इतना काफ़ी टाइम नहीं बचा है कि हम अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें। तो काफ़ी हम यूज़ करते हैं, तो सफिशेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ में काफ़ी का प्रयोग करना होता है। सो दिस इज़ माई थर्ड पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट इज आउटफिट और अटायर। सो आउटफिट मीन्स हमारी पोशाक, कपड़े जो हम वियर करते हैं। सो नाउ यू हैव लिसन मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आउटफिट वर्ड इज नॉट प्रोबेबली यूज्ड in the English, like now generation is using this word attire most of the time. attire का भी सेम मतलब ही होता है पोशाक और कपड़े। the words are different but the meanings are same. so if we use attire in our English sentence, so how we can use that? We can use like she was wearing black attire yesterday, कि उसने कल काले कपड़े पहने हुए थे। काले कपड़े को हम, पोशाक को हम अटायर या आउटफिट कहते हैं। सो दिस वाज माय फोर्थ पॉइंट। सो माय फिफ्थ पॉइंट इज आउटकम। आउटकम इज द वर्ड विच वी प्रोबेबली यूज। इसका हिंदी में मतलब है परिणाम। परिणाम, किसी चीज का रिजल्ट आना, दैट इज कॉल्ड आउटकम। वैसे तो हम रिजल्ट वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट अगर हम आउटकम वर्ड यूज़ करते हैं, सो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ न्यू वर्ड इफ यू यूज टू इम्प्रेस समवन, सो वी कैन यूज आउटकम। इफ यू वॉन्ट एज अ विश, यू कैन जस्ट यूज अ रिजल्ट ऑल्सो। तो आउटकम का मतलब होता है परिणाम। इफ वी यूज दिस वर्ड इन इंग्लिश सेंटेंस, सो हाउ वी कैन यूज लाइक he has done lot of hard work for her boards, so as her outcome she gets 90 above, कि उसने जैसे कि बहुत मेहनत की है अपने एग्जामिनेशंस को लेके, इसीलिए जैसे कि उसका परिणाम 90% के ऊपर आया है। सो दैट इज कॉल्ड आउटकम। सो माय सिक्स्थ पॉइंट इज स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब है हिंदी में जिद्दी, चिड़चिड़ा। जिद्दी या चिड़चिड़ा होना। जिद्दी मीन्स जो हमारी कोई बात नहीं मानता है। हम किसी को जिद्दी बोलना चाहते हैं तो हम उसको इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं स्टबर्न। सो इफ वी यूज दिस वर्ड स्टबर्न इन इंग्लिश सेंटेंस, सो हाउ वी कैन यूज दैट स्टबर्न वर्ड? लाइक ही इज सो स्टबर्न, वी कैन जस्ट नॉर्मली से लाइक दिस टू समवन। तो स्टबर्न मतलब ये बहुत जिद्दी है। सो स्टबर्न द वर्ड विच आई जस्ट गेव यू राइट नाउ। सो नाउ my seventh word is tease. tease मतलब किसी को चिढ़ाना या खुद ही चिढ़ना। तो चिढ़ना या चिढ़ाना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं tease. So if I use this word in an English sentence, so I'm going to use like he always tease me, कि वो मुझे हमेशा चिढ़ाता रहता है। तो tease हम वर्ड यूज करते हैं चिढ़ाने या चिढ़ने को। So my eighth point is बीट। बीट मतलब किसी को मारना। मारना लाइक किसी को स्लैप कर देना या मारना, दैट इज कॉल्ड बीट। सो इफ आई यूज दिस वर्ड बीट इन अ इंग्लिश सेंटेंस, सो हाउ आई कैन यूज दैट वर्ड? लाइक हिज मदर बीटेड हिम यस्टरडे। उसकी मम्मा ने कल उसको मारा। तो बीट हम ऐसे यूज़ करते हैं जब हमें किसी को अगर हमें बोलना हो कि उसने हमें मारा या मुझे उसे मारना है, तो बीट का मतलब होता है मारना। नाइन्थ पॉइंट इज स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब डांटना। सो ये एक ऐसा वर्ड है जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम सुनते रहते हैं। तो स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना। So if I use this word in an English sentence, so how I can use that word? I can use like his mother scolded him yesterday, or her big brother always scold him,
कि उसका बड़ा भाई उसे हमेशा डांटता रहता है और उसकी मदर ने कल उसकी अपनी बेटी को डांटा। सो स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। सो माय 10th पॉइंट इज परस्यू। परस्यू मतलब किसी का पीछा करना या किसी के पीछे होना। लाइक वी कैन यूज दिस वर्ड लाइक beggar was pursuing me cause he was wanting my bag which was full of the money। now इसका मतलब होता है pursue। तो pursue हम यूज करते हैं पीछा करना में। तो दिस वॉज माई 10th पॉइंट। सो आपको मैंने ये सारे वर्ड्स दिए हैं। सो these were the words which we use probably, so you just have to write them or you just have to learn those words which I just given you right now. So I told you today that what is vocabulary, how to enhance it, and when and where to use it, and I also given you 10 particular words which we use most of the time। तो आज मैंने आपको vocab के बारे में सब कुछ बता दिया और कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे किसी से बात करते टाइम उसको यूज़ करना है, कैसे आप खुद ही पैराग्राफ में लिख लिख के vocabulary के मास्टर बन सकते हैं। सो ये मैंने आपको बताया आज vocabulary के बारे में और मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं। सो गाइज, the words which I'm giving you, you should write them and you can just simply learn or memorize them. So thank you guys for watching my video. Like my video, comment down, share my video and subscribe to my channel. So thank you so much for watching my video.